Hello everyone. Today I'm going to explain one of the basic concept of mode of heat transfer, which is conduction. Basically, we are study three types of mode of heat transfer: conduction, convection, and radiation. And in this video, I'm going to explain some of the physical significance of conduction, how we can observe conduction in real life. So basically, what is conduction? We started from this, and then we'll take some other examples which we can observe in our real life also. So the conduction is a process, or we can say it is a mechanism of heat propagation from a region of high temperature to a region of lower temperature within a medium. Medium can be solid, liquid, or gaseous. But between the different medium, there must be a direct contact. सो मैं ये कह सकता हूँ कि जो कंडक्शन प्रोसेस है या कंडक्शन मैकेनिज्म है, इसके अंदर हीट विल प्रोपोगेट, हीट विल ट्रांसफर from higher temperature region to a lower temperature region within a medium must be present there. If medium will be not there, then heat can be transferred through radiations only. Okay, so I can say medium can be solid, liquid, or gases, but most of the cases we can observe conduction in solid and liquids only. Okay, so the basic thing is there is a must be a direct physical contact. So let me take one very basic example where you can easily understand how conduction will happen. See what happened when I started. Let me take an example of road. See, suppose कि मैंने एक रोड पकड़ी हुई है from one hand, and from other hand I started hitting the road. जैसे ही मैंने रोड को हिट अप करना स्टार्ट किया, तो जो इमीडिएट इट मींस जो एकदम इमीडिएट इफेक्ट में आएगा फ्लेम में, या फिर कोई भी मोलिक्यूल्स आइदर एटम और इलेक्ट्रॉन जो इमीडिएट इफेक्ट में होगा फ्लेम के, वो हीटअप होगा. अब होगा क्या? जैसे ही लेट सपोज जैसे ही मोलिक्यूल्स हीटअप हुआ, होगा क्या? हीटअप होने के कारण मोलिक्यूल्स का टेम्परेचर राइज होगा. टेम्परेचर राइज होगा, इट मींस इट गेन्स द काइनेटिक एनर्जी. जैसे ही मोलिक्यूल्स का टेम्परेचर ग्रोथ हुआ, उसके पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, वो एक अनस्टेबल स्टेट में आ गया एंड इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन, और वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा है. अब ये जो मोर एक्टिव पार्टिकल है जो कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा है, ये क्या करेगा? इट विल कोलाइड वन नियर बाय पार्टिकल विच इज लेस एक्टिव मोलिक्यूल, जो कि जस्ट नेक्स्ट टू देम होगा. व्हाट हैपन? इट विल कोलाइड टू लेस एक्टिव पार्टिकल, और उस लेस एक्टिव पार्टिकल को वो एक्साइट कर देगा. जैसे इस लेस एक्टिव पार्टिकल को एक्साइटेड करेगा, व्हाट हैपन? उसको थर्मल एनर्जी इंपार्टेड हो जाएगी. जैसे ही थर्मल एनर्जी उस लेस एक्टिव पार्टिकल के पास आएगी, it will again start vibrating the layer, and the process will continue till the rod end is reached. This is the reason why we feel heat on the other end. So फंडा क्लियर है? हमें हीट क्यों फील होती है जब मैंने किसी रोड को पकड़ा हुआ है, और व्हेन आई स्टार्टेड हिटिंग फ्रॉम द अदर हैंड, व्हाई आई फील द हीट? द बेसिक रीजन इज द व्हेन आई स्टार्टेड हिटिंग, molecules will come in unstable state. They start vibrating about mean position, they collide to less active molecules, and that less active molecules get the thermal energy imparted to them, and they also started vibrating, and the process is going on till the end, and I feel started, or we feel started the heat on our hand itself. So this is the most basic example of heat transfer. So let me take some more example. I can say that if we put water in pot boil, I put it water in pot boil. What happened when I started the flame from stove tops? अब होगा क्या? हीट्स आएगी हीट्स द पेन. वो स्टॉप्स क्या करेगा? पेन को हीटअप करेगा, एंड दैट हीट फ्रॉम पेन इज इटसेल्फ ट्रांसफर्ड टू द वाटर. वो वाटर को ट्रांसफर्ड होगी. बोथ आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट. देन दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. Or we can understand one another example. Let I put up the egg in boiling water. What will happen? The water is in direct contact with egg. What will happen कि जो heat होगी water से, that will transfer to the egg.
जो एग का आउटर पार्ट होगा that will be heat up and the heat is transferred from outer part to inward part as there is a temperature difference. जहाँ पे virtue of temperature difference होगा heat will itself transfer higher temperature to lower temperature. So what will happen? So it's the hotter part of egg that end up the cooking the cooler and interior part of itself. It mean कि जो egg का hotter part होगा that end up the cooking the कूलर जो कूलर इनसाइड पार्ट होगा इंटीरियर पार्ट होगा उसको पका देगा. दिस इज द रीजन हीट इज द ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू another part of same object. This is the we can consider this example as conduction also. Let me explain you few more slides and we can able to know uh, the process more effectively. ये प्रोसेस भी हमने ऑब्जर्व किया काफ़ी टाइम. हम यू यू कैन सी यू कैन टेक 2-3 आइस एंड व्हेन यू पुट इन योर हैंड दैट आइस and you will feel that ice will start melted. तो इसका रीजन क्या है? हाउ इट विल हैपन? सी हाउ or we can say how movement of thermal energy is transferred. So the movement of thermal energy in this process is transferred same as we discussed how heat is transferred. Heat is transferred from higher region to lower region. So what will happen? The thing is जो हमारे हैंड का जो टेम्परेचर है इट विल समथिंग ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ आइस. सो व्हाट विल हैपन कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे द फास्टर मॉलिक्यूल्स जो अपने हाथ में मूव कर रहे होंगे दैट विल बम्प अगेंस्ट द स्लोअर मॉलिक्यूल जो कि आइस के अंदर प्रेजेंट है. तो वहां पे एक थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होगी अपने हाथ से कोल्ड आइस में. द कोल्ड आइस मॉलिक्यूल्स will get the cold ice molecule will get the thermal energy and they start exciting. They will start starting and the slow moving molecule जो होंगे ice के अंदर that will start moving faster. This is the reason that through conduction that it will melt out and we can easily observe this. And other than this we can discuss few more phenomena like as I discussed earlier, like I hold an rod and I put in some fire or I heat up the rod from one end that I will feel the heat. So this is the direction of heat transfer and hand or we can say that rod hot burn ro, जो hot rod होगी that will burn our hand by means of conduction. So इसका मैं एक और basic से example ले रहा हूँ. See there are two women, both are holding a rod and they put up the rod in fire. So one woman is holding a rod of aluminium and other woman is holding a rod of steel. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो हीट जो फील होगी दोनों को बोथ आर ऑफ सेम डायमीटर शेप दोनों की सेम है. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कैन आई से दैट कि दोनों को जो हीट फील होगी वो सेम टाइम पे होगी? Wrong. This is not possible. क्यों? Because the conductivity of aluminium is much better than conductivity of steel. What is the mean of conductivity? Conductivity, conductivity basically it defines the rate of heat transfer. The rate of heat transfer it is defined by conductivity. So जितनी conductivity अच्छी होगी rate of heat transfer उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी. It means एल्यूमिनियम की जो conductivity है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू स्टील. सो मैं कह सकता हूँ कि जो हीट ट्रांसफर होगी एल्यूमिनियम रोड पे वो फास्टर ट्रांसफर होगी. हीट जितनी फास्ट ट्रांसफर होगी इट मीन्स कि जिस लेडी के पास एल्यूमिनियम की रोड है शी विल फील the heat earlier as compared to the lady who holding the rod of steel, who holding the steel rod because their conductivity is less. It will transfer heat after few after few amount of time as compared to the aluminium. फंडा क्लियर है? So now we can now there is one more. Now there's your turn and I want one explanation from your side also so that we can know that your funda is clear or not. The question is you just need to think the movement of thermal energy when we were about to eat the Chinese food below. So how this is an example of conduction we can discuss in the next video, but till then
You can think about it and just go through once it and try once that you will try that you will get the answer. So guys, hope you you get the point and you understand whatever I discussed.